students, welcome to my online class. Now, in our previous class, we have already discussed about the French Revolution of 1789. Now, we have already covered about socio-religious, economic and political conditions of the French Revolution. Now, today, we are going to discuss about the intellectual current. Intellectual current means the philosophical cause of the French Revolution of 1789. Now, before we are going to discuss about the intellectual currents of the French Revolution of 1789, at first you know the meaning of the intellectual currents. What do you mean by intellectual currents? Intellectual currents means that is philosophical cause. Philosophical cause कहले तुम कौन बुझो? Philosophical cause कहले हमें बुझू ये बुझू कौन हमरा बौद्धिक कारण बा फ्रांस रो दार्शनिक मानकर भूमिका कौन थिला ए फरासी राष्ट्र विप्लव सृष्टि करिवारे से संपर्क रे आज हमें आलोचना करिवा. Now first of all we have discussed who were the intellectuals of the France on the eve of that revolution. तत्कालीन समय से फरासी राष्ट्र विप्लव समय बेलू केउ माने फ्रांस रो राजनैतिक दिग्बलय रे उभा होइतिले गोटे विशिष्ट दार्शनिक भाव रे से माने हेले. Now we have already told to you about the three brilliant sons of the France country that appeared on the eve of that revolution. They were known as Voltaire, Montesquieu and Rousseau. Now who was Voltaire? Voltaire was one of the brilliant philosophers of the world. He was visited in different countries of the world. He was studied about the political system, administration and the condition of the government. When he was returned towards his own country at France, at that time he had wrote a very good book that was a letters on English. What was that letters on English? On that book he had criticized the maladministration, the corruption of the France country on the eve of that revolution. से विप्लव समय बेलू फ्रांस फ्रांस अवस्था सरकार व्यवस्था संपर्क में विधि व्यवस्था संपर्क में आईन कानून संपर्क में से पुंखानुपुंख भाव से पुस्तिका रचना करी तत्कालीन सरकार को से क्रिटिसाइज करथिले. अर्थ लोक मैंने जो कि अंधकार मध्य रही जो छेटी को चलता कौन ना एकछत्रवाद शासन चलता कौटी फ्रांस देश में. से फ्रांस देश जो एकछत्रवाद शासन विरुद्ध में वोल्टायर कौन कले क्रिटिसाइज करी तांकर लेखानी माध्यम समस्त जनसाधारण मानकर फ्रांस चक्षुटा को उन्मोचन कर जो अंधकार भितर रही फ्रांस आदिवासी मैंने से गोटे नूतन धारणा बा नूतन दिग्दर्शन देते जे अन्य देश शासन व्यवस्था यही प्रकार रही आम देश कहीं हम से प्रकार शासन व्यवस्था अन्य देश लोक मैंने यही सुविधा सुजोग पाँच आम देश कहीं से सुविधा सुजोग न पाइबे लोक मैंने यही कथा को आखि आगे रखी वोल्टायर जो क्रिटिसाइज कले क्या फ्रांस सरकार को. Now he had also told about church is the barrier of human progress. What do you mean by church was the barrier of the human progress? मानव समाजर प्रगति संपर्क में चर्च हूँ गोटे एक प्रतिबंधक गोटिकार फ्रांस से चर्च को कौन कले क्रिटिसाइज कले कहीं तत्कालीन समय फ्रांस चर्च माने समग्र फ्रांस एक तृतीयांश संपत्ति अधीन रही से निज मन इच्छा से खर्च करते से उपभोग करते. तेणुक वोल्टायर कौन कले पुस्तिका लेटर्स ऑन इंग्लिश से तत्कालीन समय फ्रांस सरकार विरुद्ध फ्रांस राजा विरुद्ध फ्रांस शासन व्यवस्था विरुद्ध से वोल्टायर कौन करते समालोचना करते जहाँफल कि लोक मैंने सचेतन हो उठिले सेठिकार शासन व्यवस्था संपर्क में सेठिकार अवस्था संपर्क में सेठिकार आईन कानून संपर्क में लोक मैंने विप्लव सृष्टि करने मनस्थ करते. तेणुक फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ऑलरेडी टोल्ड टू यू दिस वाज नॉट ए सडन आउटब्रेक ऑफ दिस रिवोल्यूशन. दिस वाज ए प्रिपेयर्ड रिवोल्यूशन थ्रू आउट द 18th century. It was took time to prepare that revolution. One day, that was 1789, it was arrested as the name of France Revolution. Now, the Voltaire, when he was criticized about the church, about the maladministration of France country, about his system, about his law, all the social structure, he has criticized about that book. Now, he was famous
about that book, the letters are in English. Enter the world people, they were appreciated that book, and he has popularized in day by day about that book. Then the entire France people, they had followed that book, they had followed his leaflet, they had followed his pamphlet, they had followed his writings about the Voltaire. Then they were agitated against their own government, own system of their own country. So it was one of the major reason for the outbreak of that revolution. So far we have already told to you the French philosophers, they had sowed the seed in the minds of the French people. সেই ଫ୍ରାନ୍ସର ଦାର୍ଶନିକମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଫରାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଏ ଯେଉଁ ବିପ୍ଳବର ମଞ୍ଜିଟାକୁ ବପନ କରିଥିଲେ ତାହା ତ ବୁଣି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି এই ବିପ୍ଳବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ଯାହା କହୁଛେ ଆମେ এই ଯେଉଁ ଫ୍ରାନ୍ସର ଦାର୍ଶନିକମାନେ ସେମାନେ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଇଥିଲେ, ତାହା ତ ନିଆଁରେ ଘିଅ ଭୂତ ଢାଳିବା ସଦୃଶ୍ୟ କରି ହେଇଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ, ତାଙ୍କ ଲେଖନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କି ଫିଲୋସଫି ରହିଥିଲା, ଯେଉଁ ବୈଦିକ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଥିଲା, ସେ ତତ୍ତ୍ୱ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲେ, ସଚେତନତା ଲାଭ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏଇ ବିପ୍ଳବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅତି ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା, ଅସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା କ'ଣ अबाउट द इंटेलेक्चुअल करंट रे आसले कौन वोल्टायर, तापर आसले कौन मॉन्टेस्क्यू। Who was Montesquieu? Montesquieu was also one of the famous philosophers at the time of France Revolution on the year of 1789. Montesquieu had advocated a very good theory. He had criticized the government, he had criticized the system of the France country, and he had advocated the separation of power. What do you mean by separation of power? ক্ষমতার পৃথকীকরণ। He had wanted the three organs of the government. What are the organs? Executive, legislative, and judiciary. Three organs of the government must be separated from each other. तत्काल समय फ्रांस जो व्यवस्था चली थिला, जो कि एकछत्रवाद चली थिला, ए तीन गोटी जाक व्यवस्था राजा हस्त में परिचालित होउथिला, जहाँ फल से कौन सृष्टि होइथिला ना एकछत्रवाद शासन सृष्टि होइथिला। तेणुकरी मॉन्टेस्क्यू कौन कहले, वर्तमान सरकार जो कि तीन ऑर्गन रही, तीन व्यवस्था रही, ये तीन व्यवस्था कौन हम सेपरेशन एग्जीक्यूटिव मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम द जुडिशियरी। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी तीन जाक सरकार जो अंग रही सब संपूर्ण रूप से पृथकीकरण करने से दाबी उपस्थापन करते किए मॉन्टेस्क्यू। तापर आम आसवा रूसो। हु वाज रूसो? रूसो फ्रॉम हिज चाइल्डहुड he had brought from dust into the glory. रूसो थे जड़े एपरी एक दार्शनिक जे कि पृथ्वी विश्व विख्यात दार्शनिक, जे कि धूलिकण माटी से उठी सर्वोच्च शिखर में पहुँची पार्थे। बाल्य जीवन अत्यंत दयनीय थिला, दुख दरिद्र भाव जीवन कालातिपात करते। कि सी कौन कले, फिलोसफी दार्शनिक तत्व प्रदान कले, समग्र विश्व से कौन आदर पात्र हो पाते समग्र विश्व निजर एक आदर्श दार्शनिक भाव में ग्रहण कर पाते। क्या रूसो को रूसो कौन कहले? रूसो हैड टोल्ड मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन। तार अर्थ कौन बुझ? मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन। मनुष्य कि भूमिष्ठ हुए पृथ्वी पृष्ठ में से मुक्त भाव में भूमिष्ठ होता है, किंतु वर्तमान जो सामाजिक श्रृंखला माध्यम से बंधा है। यू अवेक एराइज एंड ब्रेक यूर चेन बोली रूसो कहले। जो मानव जो सामाजिक श्रृंखला तुम जो बांधी यही चेन टाक तुम छिंडे दियो, जागी उठ, माड़ी जाओ और चित्कार कर क्या विरुद्ध ये जो एकछत्रवाद शासन विरुद्ध। सो ही हैड told about the social contact theory. Who told? Rousseau. Rousseau had advocated his very good famous theory, the social contact theory. In the social contact theory, he had said what? Man is born free, but everywhere he is in chain. So you break your chain, awake and arise and sound. तुम से श्रृंखला को बंधन को छिन्न कर दियो, तापर तुम मारी जाओ, जागी उठ, तुम आंदोलन कर बोली से कहले। किए कहले? रूसो कहले। जहाँफल कि यही रूसों थ्योरी, रूसों तत्व लोक मान
शुआईला लोक मन एक सिंहर शक्तिर जागरण सृष्टि करथिला जहाँफल कि समस्त समग्र साधारण जनता गोटिकार फ्रांस से माने विप्लव सृष्टि करने आगमन हो पड़ते जहाँफल कि जो भूत भितर इंधन नियमित भूत डालिया सदृश यह कृषकर वाणी संपर्क कृषक जो कि वाणी प्रदान करते फ्रांस में जो कि बौद्धिक तत्व सृष्टि करते जो कि थियोरी थिला सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियोरी ताहा लोक मैंने अवगत है से प्रकृत तथ्य कौन रही से संपर्क में जानीपारे जहाँफल कि लोक मैंने ये आंदोलन करने सक्षम हो पारे। Then we have come to the topic about the role of the middle class. Now, what are the role of the middle class people of France country and the eve of that revolution? ये जो साधारण जनता मध्यवित्त श्रेणी लोक मान भूमिका कौन थिला यही फरासी राष्ट्र विप्लव संपर्क समग्र मानव सहयोगी थिले फ्रांस समग्र मध्यवित्त श्रेणी लोक मैंने ये विप्लव सृष्टि करथिले। So far by the name of the France people it was known as France revolution. ये जो कि मध्यवित्त समस्त जनता यही विप्लव में भाग नहीं अंशग्रहण करते तेणुक से नाम अनुसार फ्रांस लोक मान आदिवासी नाम अनुसार से कौन करते विप्लव नामकरण कर फरासी राष्ट्र विप्लव बोली। ये जो कि मिडिल क्लास पीपल थे कौन दे वर नोवेयर वेरी इंटेलेक्चुअल देन दैट ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट पीपल ऑफ फ्रांस कंट्री। से जो मध्यवित्त श्रेणी लोक मैंने कौन प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी जो कि क्लेजी और नोबल मान ठार अत्यंत इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी थे धनशाली थे तथापि दे वर ट्रीटेड एज अनप्रिविलेज्ड क्लासेस से कौन अनप्रिविलेज्ड क्लासेस से गणित होते लोक मैंने मध्यवित्त श्रेणी लोक मैंने ये मध्यवित्त श्रेणी लोक मैंने ही कर खजना समस्त प्रदान करते क्या राजकोष को से राजकोषर अर्थ राजा राणी और राज कर्मचारी से समस्त उपभोग करते ये जो कि एक छत्रवाद शासन किंग जहाँ कह राजा मैंने क्यों राजा मैंने शासन करते एंड द इव ऑफ दैट फ्रांस रेवोल्यूशन 14 लुई ठार आरंभ कर 16 लुई पर्यंत शासन करते कोटे फ्रांस के जो फरासी राष्ट्र विप्लव सृष्टि है से समय समस्त राजा मैंने फ्रांस जो चतुर्थ लुई ठार आरंभ कर 15 लुई 16 लुई समस्त थे कौन दे बिलीव्ड द डिवाइन राइट थ्योरी ऑफ किंगशिप मैंने राजा हूँ एकमात्र व्यक्तित्व जी कि स्वर्गर मर्त्य को आसी ईश्वर द्वारा प्रेरित होती मर्त्य को से जहाँ कहे दैट इज करेक्ट। सो दिस मेंटालिटी दिस एटीट्यूड दिस आउटलुक ऑफ द फ्रांस किंग वाज एस्टैब्लिश्ड इन योर फ्रांस द डेस्पोटिक रूल द ऑटोक्रेटिक रूल इन योर फ्रांस। So the common class people or the middle class people, they had combined, they had shouted, they had agitated, they had revolted against the maladministration, the corrupt administration of the French king, the corrupt administration of the French administration. So far, the role of the middle class people was very, very important for the outbreak of the revolution of 1789. Now we have already covered about the France Revolution of 1789, the socio-religious, economic and political conditions, then intellectual currents, then role of the middle class people. ये फरासी राष्ट्र विप्लवर कारण मानक मध्य प्रथम कारण हूँ कौन सामाजिक कारण द्वितीय कारण हूँ धार्मिक कारण तृतीय कारण है कौन अर्थनैतिक कारण चतुर्थ कारण है राजनैतिक कारण तापर आसला कौन बौद्धिक कारण जहाँकि दार्शनिक मानकर भूमिका कोटे फरासी राष्ट्र विप्लव समय फरासी राष्ट्र विप्लव तापर आसिले कौन द रोल ऑफ मिडिल क्लास पीपल मध्यवित्त श्रेणी लोक मान भूमिका कौन थिला ये फरासी राष्ट्र विप्लव सृष्टि करिबारे। नाउ दिस टॉपिक द फ्रांस रेवोल्यूशन ऑफ 1789 is already over. Now our next topic, the Unit 2 of the history of modern Europe, Unit 2 was revolution and its European repercussion. In our coming class, we have discussed about the revolution and its European repercussion. कहीं विप्लव समय जहाँ किसी घटना घटी तार पुनर्जागृति पुनर्निर्मित कौन सृष्टि होता कौटी यूरोप में से संपर्क आम आलोचना करें दैट वाज द रिवोल्यूशन एंड इट्स यूरोपियन रिपरकशन। कमिंग टॉपिक
Coming class, we have discussed about the unit 2. This much. Thanks to all.